is Russian aggression. It's invasion. It's coming into they invaded a country, and they're blaming Russia for all this destruction that is taking place due to war. So now my point of view, I basically feel that countries like Pakistan, we should not become partisan in this. We should not pass value judgments on this or moral judgments on this. The reason, I don't feel that our countries should get involved in conflicts that don't affect us. And I'm talking about developing world, countries like Pakistan, which have 100 million people vulnerable, almost 50 million people below the poverty line, 50 million people above the poverty line. And so when we make moral judgments in conflicts, it comes at a cost for countries like us. So, for instance, we would have wanted cheap oil from Russia. We would have wanted wheat 2 million tons of wheat from Russia. A gas pipeline was arranged with a Russian company. So all that gets affected the moment you take sides. And our neighbor India, which is a part of the Quad, which is a strategic military, economic military alliance with the United States, India abstained in this because they too felt that they needed cheap oil from Russia. And what this conflict has done, post the COVID situation, where already there was a commodity super cycle, and this conflict has raised energy prices to the level which is causing a lot of problems in Europe. We all know that in Europe they are suffering from gas shortage and energy prices spike. But in the developing world, it has caused a massive problems in our balance of payments, because it has just, the oil prices going up, I know they're coming down now, but that caused an enormous problem for countries like us. So therefore, my take on this, there are 2 points of view. We would like to abstain, my country, we would like to abstain in this. But I do feel that this conflict has caused massive problems all over the world. Thank you very much for your answer. The next question is about China, and Always will ask that question. Keeping with our theme about world and regional politics, we'd like to stick with talking about the great powers. For the past 3 decades, the power of China has been on a steady rise economically, military and technologically, among other spheres. It has certainly become a world power. Pakistan has also been one of its major partners, not only economically but also geopolitically. How will Pakistan maneuver between China and the United States, particularly in growing U.S. pressure on Pakistan to take sides? How do you envision the role of China in a multipolar world and in competition with the U.S.? Well, Wes, the problem is that, when we are countries, again, I sort of following from your first question, when we are weak countries, we developing countries are pushed to take sides. And I feel that Pakistan should not take any sides. I'm talking about our country. Because, why do we have to take sides? Pakistan should have good relationship with both China and with the United States. Similarly, I feel with Russia and the United States. For instance, that's the policy of India. I must say that I've always admired the way India remained non-aligned during the Cold War. I thought it was a sensible thing to do. I mean, when you become part of a bloc, that means that the whole other bloc is excluded from you. And of course, great powers do put enormous pressure on you to take sides. So let me first say that China-Pakistan relationship goes back a long time, 60 years. And China has been what we call always a friend in need. China has stood by Pakistan, whether it is on international forums on politics. For instance, Kashmir is an issue, a United Nations resolution on Kashmir stating that there should have been a plebiscite in Kashmir for the people of Kashmir to decide whether they wanted to be with India or Pakistan. And that right was not given to them.
But hardly any other country stands with us. China has always stood with us, and I must say, Turkey has stood with us. But even Muslim countries, despite knowing the injustice going on in Kashmir, just like in Palestine, they do not stand with us. But about China, I have seen the development of China in the last 30 years, and I must say, what they have achieved there is no precedence in human history of what China has achieved. They have lifted 700 million people out of poverty in the last 35, 40 years. It's never been done in human history. And when you go to China, the rate of their development is phenomenal. And I just do not think that Western countries will be able to compete with them. Because, the electoral politics, it has its limitations. I mean, the amount of maneuvering a democratic government which comes about through electoral politics, you have a lot of limitations. In China, what is considered national interest, the people stand with the government. And what they managed to do, like for instance, shifting populations, I don't think that can happen in Western countries. So I just don't think that the other countries will be able to stop the growth of China. Their system of meritocracy. I visited China and I saw the way they bring up all their talent. And then their single focus, long-term planning. I haven't seen such long-term planning in most countries. Certainly countries like us, which every 5 years are supposed to have elections. So very rarely governments plan beyond 5 years. But in China, they have just planned so far ahead. And then they single-handedly pursue their goals. And I feel that, China is going to be the, I think it will leave everyone behind. Thank you very much, respected Chairman. I cannot leave the issue of China aside as a Muslim think tank and not raise the plight of the Uyghur Muslims. On a lot of issues, Muslims around the world are concerned about the events that are happening in Xinjiang. Pakistan has been a champion of Muslims all around the world. How do we hold both of this in tension? Well, let me say that, the Pakistan-China relationship is such that whatever the issues of Uyghurs, we have always, the Chinese have always preferred to speak behind closed doors. They're very, their system is such that they hate talking about sensitive issues like Uyghurs in public. So we've had discussions with them, and they give us a different side of their story, and there are always two sides of the story. And so, the conversations I've had with the Chinese government on Uyghurs, we have always, knowing the sensitivity they feel, we've kept that behind closed doors. Thank you so much. I want to now ask one of our members here to direct the next question. Let me introduce Dr. Mubin Shah, who is the head of the Istanbul Kashmir House. Dr. Mubin Shah. In the name of Allah, Excellency, it's a pleasure to talk to you directly today. Excellency, this is Dr. Mubin Shah, Kashmiri in exile. As far as we can tell, in its hour of need, Pakistan has all but abandoned Kashmir in everything but territory. What is your and PTI solution for the people of Kashmir? When in power, how would you maneuver support for Kashmiri resistance movement, taking Ukraine as a model within Muslim world, with OIC as the biggest support factor to impose sanctions and back resistance of Kashmiris militarily? In these challenging times, what is Pakistan's solution to grave issues faced by Muslims in South Asia, particularly in India? Excellency, I thank you. Well, Mubin, when I was the Prime Minister, we took a very strong stand for Kashmir. And I think
you would have known that we have my government at least, on every international forum we spoke about the people of Kashmir, especially after 5th August 2019 when they took away the statehood of Kashmir, which was against all international laws. It was against the United Nations Security Council resolution, which clearly stated that Kashmir would have a special status until they were given their right of self-determination. So without giving them the right of self-determination, they took away the statehood. So we stood with the people of Kashmir and we broke all relationship with India. And that has remained up to this point. It's the case now that we actually have broken relationship with India, and at every international forum we have tried to put pressure on them. Now, apart from that, what else can we do? Give them moral support them everywhere. But when you say, I don't know what you mean. I mean, do you think we should militarily go into Kashmir, which is obviously clearly not an option? There are two nuclear armed countries. It's not a Ukraine type situation. Pakistan and India, the moment there is a conflict, I think there is always a danger that it will go out of hand. In Ukraine, for instance, if Ukraine had nuclear weapons, firstly, this might not have happened, this conflict. But had it happened, the whole world would have been petrified of a nuclear war. So therefore, with Pakistan, India, military solutions are not an option. Short of that, what else can we do? Well, raise it on every forum, and it has cost Pakistan quite a lot by breaking away all diplomatic relationships with India since 5th August 2019. So what kind of words of hope can you give the people of Kashmir? Because this is a very bleak picture right now. It's, circumstances always change. I am a firm believer that, you just keep pressure. People of Kashmir have patience. They have given tremendous sacrifices. Almost, 100,000 Kashmirs have been martyred in the last 30 years or just above 40, or around about 40 years. But, they're resolute. They're not giving up. And this will, sooner or later, the Indian government will have to restore their rights. At the moment, the people of Kashmir are just deprived of all rights. And what the Indian government hopes to do is to alter the balance, the demography of Kashmir by settling in non-Muslims into non-Kashmiris and Muslims into Kashmir. And what they hope is that eventually the balance will be changed, and when they have elections or plebiscite, there will be more non-Muslims who will then vote for India. So this is the game plan for India, but it's not working because the people of Kashmir have not given up. And I think the settlers find it very difficult to move into Kashmir in a hostile environment. And I really believe, I am a firm believer that Kashmiris will get their independence, their right of self-determination. Thank you. Thank you very much. Our next question is about Pakistan's nuclear policy, and it would be asked by Dr. Nizar Krekish, who is the director of the Bayan Center for Studies from Libya. Dr. Thank you. Nizar. Thanks. As the only Muslim state that has nuclear weapon, can Pakistan potentially provide a nuclear cover for the Muslim world? In other words, do you think Pakistan should put other nuclear power nations notice that they cannot use nuclear weapons against other Muslim states, because that would also constitute aggressive against Pakistan? For example, can Pakistan give nuclear cover against Israel potential use of nuclear weapons against its neighbors? Is it strategic in the area or just restricted for Pakistan, this nuclear weapon? Well, at the moment, first of all, let me tell you, I'm not a great fan of nuclear weapons because I do believe in settling your issue. I'm not also a great fan of military solutions. For instance, I would never try and solve issues militarily, but for me, it is basically for defense. I mean,
if someone is going to take away your freedom, then that's when you fight for it and you use military. So the Pakistan military, the nuclear program has always been a defensive one, because India is 7 times the size of Pakistan. It has huge resources now. And the people in Pakistan have always been threatened by the idea that a bigger neighbor would just overwhelm the country. So remember, we've had 3 conflicts with India. And this was from 48, 1965, and then 1971. And so ever since Pakistan's had the nuclear program, we actually have had no conflict. So it gives the country of 220 million people security when you're facing a neighbor which is 1.3 billion people. And hence, it's a nuclear program for Pakistan is essentially defensive. So just to clarify this point, if in the future you were Prime Minister and a Muslim country was threatened with nuclear weapons, will you take action or just stand by? Well, I can't say right now that Pakistan will be able to stand up for other Muslim countries right now. I just think that, the idea of, I again repeat, the idea of a nuclear war, the idea that you will actually be face to face with another country with nuclear weapons is beyond my imagination. And I say this simply because, nuclear war is the end of the world. You must remember it's a suicide attack on the world, because I don't think the world will be able to sustain or survive a nuclear holocaust. So, the answer to the question is simply that there are other ways that the Muslim countries can put pressure on the injustices that are going against the Muslim countries, and that is through the OIC. Unfortunately, right now, the OIC has not really fulfilled its role as an organization that would stand up for Muslim causes. Unfortunately, there are too many self-interests. There is not enough, governments are not enough representative in the OIC. In other words, they don't represent the public opinion. So the public opinion all over the Muslim world is the same. They feel the pain of what is happening, injustices in the Muslim countries. But when you have governments that have no connection with the public opinion, then they're not bothered what the public opinion thinks. And hence you find very few countries which have spoken out for Muslim causes. Because only those countries where you have Muslim democracies, where you have governments representing the public opinion, only they speak out against the injustices, say in Palestine and Kashmir and elsewhere. Thank you so much. We're going to move on to our second segment, and this is a good segue to talk about the Muslim world and the Ummah. I have with us Mr. Naeem Jinnah from the center, who is the director of the Afro-Middle East Center in South Africa. He's joining us online. Thank you, Uwais. Excellency, in many of your speeches, you have equated Western intervention in Iran to how the West interferes in the internal affairs of Pakistan as well. And of course, many of us believe that there's a personal issue here for yourself also. Since the 1979 Iranian Revolution, Iran adopted a kind of policy of independence, neither East nor West as they called it, and coupled that in fact with hostility towards foreign powers, promoting what it regarded as its version of an Islamic state. That country, Iran, has now lived under sanctions for 43 years almost. Sanctions, destabilization, etc., with the objective, of course, of regime change in Iran. From a Pakistani perspective, how do you view Iran? A hostile power, a potential strategic partner, a competitor? And I ask this question particularly in light of your earlier comments about non-alignment, I think, which is a very valuable articulation.
And how exactly is Western pressure on Iran similar to that on Pakistan? Well, in Iran during Mohammad Mossadegh's premiership, and his government was removed, and this is now documented, was removed by the CIA. And it was because an independent-minded prime minister took over in Iran and wanted to make policies for the interest of the people of Iran. And so we all, you know, we all know what happened to him. You know, there was this, first of all, there was this campaign, propaganda campaign against him in the media. Then it was the opposition parties were paid to do demonstrations against the government of Prime Minister Mossadegh, and then his own party members were given money to change party affiliation, and eventually it was the final was the army which removed him. So it was a very similar pattern followed when my government was dismissed. But you know, let me just talk about Iran. I find that it is most important for a country to live with dignity and self-respect. I mean, that for me is the most important thing. You know, we Muslims, you know, our oath with the Almighty is La ilaha illallah. There is no God but Allah. It gives us dignity, self-respect. We are not supposed to bow in front of anyone but the Almighty. And the Muslim countries, you know, when they become subservient or when they become client states, when they lose their dignity, you know, and unfortunately in Pakistan we have suffered from this. I have found the Pakistan's foreign policy, vast majority of the people of Pakistan have found it very undignified, because we have relied on aid and we stretch our hands and we get money, or we fight other people's war, and then, you know, we participate. A lot of our own people die in this, and we do it for foreign aid or US dollars. And I think, you know, it has consequences for a society. Number one, the society never learns to stand on its own feet, because only when you stand on your own feet do you realize your strength. But when you're always having crutches of foreign aid, just because, you know, you're trying to serve someone else's foreign policy objectives, you lose your dignity. And for me, the people of Iran might have suffered, but, you know, they haven't lost their dignity. They you know, we will disagree with, you know, maybe what their worldview is. We might disagree with their worldview of Islam, but, you know, you cannot disagree with them standing for their sovereignty. So, you know, I admire that about them. Thank you very much, Your Excellency. Our next question comes from Imran Khan, who is a PhD candidate at Istanbul Sabahattin Zaim University and also a research associate at CIGA. Mariam, are you there? Assalamu alaikum. It's really a pleasure to sit in front of you. I am personally a voter of PTI and I'll be ever. My question is regarding Afghanistan. It's been after 2-decade-long war of US against Afghanistan. Taliban have turned to power now, which wasn't supported by leftists in Pakistan because they saw them as a source of terrorism. Now, we Pakistanis are again facing a wave of terrorism, and Islamabad is on high alert. So how do you see the Taliban in Afghanistan, and how do you think that the current security threat which Pakistan is facing now has something to do with Afghan Taliban also? Also, you have supported a lot of you know, laws like blasphemy law and religion-based laws. But on the same time, you have criticized a lot of religious parties which were in the coalition. So how do you see the role of religion in the politics? Thank you so much. Okay, so first of all, you must differentiate between the Afghan Taliban and the Pakistan Taliban. The Afghan Taliban are completely different.
their aims and objectives are completely different to the TTP, which is the Pakistan Taliban. Who were the Pakistan Taliban? When the Afghan Jihad was conducted from the soil of Pakistan, it was conducted to what was called the tribal areas of Pakistan, or FATA. Now, these were areas adjoining the Afghan border. And all the sort of incursions into Afghanistan by the Mujahideen were from the tribal area. And a lot of the fighters also from Pakistan were from the tribal areas. And there were Pashtuns, which were the Pakistani. You must remember, Afghanistan is 50% Pashtun, and 2/3 of Pashtun live in Pakistan, and most of them along the border, the eastern border of Afghanistan. So therefore, there was a lot of Pashtun sympathy for the Afghan Jihad. So hence, from the tribal area, the border adjoining Afghanistan, that's where the fighters used to go in, and the Mujahideen used to operate. So when come 9/11, Afghanistan gets invaded by the Americans. Now Pakistan government took this stand, which I opposed. We should have stayed neutral. They started supporting the US war on terror. And so the same people who had been fighting jihad against the Soviets because they were foreign invaders now were told that because it's the US, if you fight against them, it's terrorism. So they turned against the Pakistan government. And so what we had was, in tribal areas, the people turning against the Pakistan government, and they were called the TTP, the Pakistan Taliban. And so there were two different things. Afghanistan Taliban were not connected with them. I mean, they were connected vaguely, but not really. There was not real connection with them. So what happened was that after Kabul fell to the Taliban last August, the Pakistan Taliban were then asked by the Afghan Taliban to go back into Pakistan. And unfortunately, that was a great time for us my government was already negotiating with them so that we would do a resettlement of these people, because there were about 40,000 people which were moving into Pakistan, amongst them about 5,000 to 10,000 fighters, but their families too. So unfortunately, when my government went, the eye was taken off the ball, and the new government and the setup, our military establishment did not pay enough attention to what was happening with the resettlement, the Taliban coming in. And so therefore we have this wave of terrorism coming in now, and this is all along what was the former FATA, the former tribal areas, because they've got merged into Pakistan. So we have a wave of terrorism in Pakistan right now, and this needs to be dealt with before it goes out of hand. Now I come to what you're talking about, religious parties and religious laws. Look, let me first tell you about the blasphemy law. The blasphemy law was not made by Pakistan, it was made by the British when they were ruling India. And the idea of the blasphemy law was that if one religious community, and remember there were multi-religious communities living in villages. There were Hindus, there were Sikhs, there were Muslims, there were Christians. So if one religious community said something which was derogatory against another religious community of a sacred entity, so there would be riots, there would be a lot of people killed. So the British then brought in this blasphemy law that you were not allowed to say anything derogatory about any religious entity of any other religion. That's how it came about, to stop riots. So therefore, rather than there being lynching crowds and lynching mobs going on and killing people who thought that their religion blasphemy had been committed against them, now it was an offense, so you had to actually go to court to prove that. So that was to stop mob violence, lynching crowds. So Pakistan basically the policy. And in Pakistan, it makes sense because we have different religions here. And we have had in the past, when someone thinks that our religion has been blasphemed, there've been mob violence. There've been
people lynched. And this now is an offense in Pakistan because you have to prove that it's blasphemy. And for that you have to go to a court. Very well. Thank you. Thank you very much. Our next question is about Turkey. And we have with us Dr. Yasin Aktay. Dr. Aktay is a professor at Bayezid Yildirim University, and also he is a former member of parliament and widely known here in Turkey. Dr. Aktay. First of all, thank you very much for sharing your very, very valuable perspective with us, and thank to CIGA for gathering us together in this platform. For the past 2 decades, Turkey has become an important and rising power, not only in its region, but also in the Muslim world. I think you can share this idea. The relationship between Pakistan and Turkey is the lasting legacy of Pan-Islamism. The story is well known, as you know. Muslims in the subcontinent supported the Turkish people with their bodies and wealth during the height of colonialism. But in reality today, the Turkish-Pakistan relationship is a failure from many angles. The historical nostalgia has been manipulated by NATO interests, as it was dominated and controlled by the military through the Cold War years. Today, it has resulted in nothing tangible. No visa-free travel, no free trade agreement, no military alliance, no free technology transfer agreement, no people-to-people cooperation, etc. Now my question is coming. Do you feel Pakistan has benefited from Turkey's rise, and if so, how? And do you envision a strategic partnership beyond rhetoric between the two important Muslim states? And lastly, what other Muslim states do you see as strategic partners to Pakistan? Thank you. Well, first of all, let me say that there's a people-to-people relationship between the people of Turkey and Pakistan. And this, again, what you quite rightly pointed out in history, was at a time when in Turkey, the Western powers or European powers were about to take over in the 20s or late 1919s and 1920. At the time, we were fighting. A lot of the Muslims of India and what is now Pakistan collected a lot of money, and they gave. They were standing with the people of Turkey, and I think that's what is remembered in the Turkish mindset. So the relationship is very deep. When I became the Prime Minister, with President Erdogan, I had a very good relationship, and we were trying our best to further our contacts. I was only in power for 3.5 years, and in that time, unfortunately, Corona came in. The 2 years were basically 1.5 years were lost in the coronavirus. And so for our first year, we had a bankrupt country, so we were trying to be solvent. So basically in the last couple of years, we were trying to form what you call trade relationship. We had a committee formed by the president dealing with the committee formed by me in Pakistan to further our contacts, our relationship. It was quite a relationship which covered a wide area of things. And unfortunately that, when my government was removed, we were just deepening our relationship, and there were various political crises which kept coming on the way. And but I do feel that for the future, the relationship with Pakistan and Turkey will grow. Look, Pakistan has gone through a bad period in the last 30 years. We lost our momentum of growth. Pakistan just did not live up to its economic potential. We had two terrible governments of two political families who ruled us for 30 years. And they're still here. They've been in power for 8 months. And they have basically run this country into the ground. So Pakistan in the 60s was one of the fastest growing economies in the world.
and especially in the developing world, Pakistan was given as an example. A lot of countries followed Pakistan's model in the 60s, Malaysia, South Korea. You know, we were considered a model. And as I said, unfortunately, in the last 3 decades, we lost that momentum because, you know, we had very poor governance. So looking ahead, I think Pakistan and Turkish relationship has tremendous potential. And we were discussing, there were a lot of mutual areas which we could benefit each other, because there's a lot of strengths in Pakistan which are still, we have potential, but we haven't realized them. But in Turkey, you know, we were working out on how mutually we could benefit each other through trade. Thank you very much. I can't leave this without that you and President Erdogan, and I believe also the President of Iran, were talking about how to confront Islamophobia. Say, in 1 minute, what project do you think the 3 countries should embark upon to confront this rising problem of Islamophobia? You see, Islamophobia, let me just give you a quick, I'm just going to be very quick about this. This all started when the Iranian Revolution took place. There was a fear in the Western countries that all Muslim countries will be taken over by Islamic revolutions. And so they divided the Muslim world between moderates and fundamentalists. And in 1989, when Salman Rushdie, or sometime then when Salman Rushdie wrote that book, Quranic Verses, there was a wave of anger in the Muslim countries. The West could not understand why were the Muslims so upset, because they, especially Europeans, their idea of religion, or the way they treat, for instance, Jesus Christ, is completely different to the way Muslims love and respect and revere our Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. And they couldn't understand this. And the Muslim world never explained to them why were they so upset. And so that added to this suspicion about Islam. And then, of course, 9/11 took place. So after that, Islam was equated with terrorism. For somehow, suicide attacks were only by Muslims, because we were supposed to be these radical people. And unfortunately, the worst role was played by the heads of Muslim states. Everyone, rather than trying to explain to the Western countries that, look, radicals, moderates, and liberals are in every human community. There is no such thing as radical Islam or Islamic terrorism. You know, these were terms given to create the impression that somehow terrorism and radicalism was connected with Islam. And the Muslim heads of state were so keen to become all moderates and liberals just to please the Western countries, they never explained to them that there is only one Islam, and that is of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And actually, we never ever helped fight Islamophobia. We never, by never explaining anything to them. So Muslims in Western countries suffered a lot after 9/11 because, as I said, Islam was equated to terrorism. And there was this radical Islam, you know, Muslims kept saying we're all against radical Islam. But how was the man in the West ever supposed to understand the difference between moderate and liberal Islam? So they thought of all of Muslims as terrorists. So now what needs to be done is that OIC must take the premier role in this to explain to Western countries. They must form a body of scholars which will be able to speak to the Western countries in their own language. So to make them understand, you know, the differences, what causes problems between and what causes Islamophobia. And I feel that can be done. And I also feel that, you know, Al Jazeera, TRT, channels that can sort of give the Islamic version to the Western countries are very important. They need to have material which will explain to the Western countries about Islam. Majority of the people in the West do not understand Islam. And the problem is that it can be manipulated by those people who are anti-Islam. So they can manipulate this ignorance against us. And that's why it is very important communication through media and
OIC should take responsibility for this. Thank you so much. I want to remind all the participants that we need to move faster because the time of the chairman is quite precious. And the next person we have is Nasrul Zaman Naeem. He is of the Bangladeshi Student Association in Turkey and also a PhD student at Istanbul Sabahattin Zaim University. The floor is yours. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Moderator, for giving me the opportunity. As we are talking of the Ummah today, let's turn to an issue closer to home. As we all know that both Bangladesh and Pakistan contains a significant proportion of Muslim population in the world today. But it is unfortunate and it is apparent that the relationships between Bangladesh and Pakistan are not good. So why is this the case in your opinion? Also, we often speak about the brotherly relationships between Muslim majority countries, but all of those talks are actually empty. So, as a politician, what is your vision regarding Bangladesh? And also, as a politician, what would you suggest as way forwards to improve the relationship between Bangladesh and Pakistan in near future? Thank you. Well, first of all, the reason why our relationship has not grown or improved is because of sadly the events of 1970-71, when the ruling party, the party that should have been given government, the majority party was not given, was not allowed to have its mandate and form government in Pakistan. And that led to the breakup of Pakistan and the formation of Bangladesh. But unfortunately, the events that followed, the military operation which followed, that created that deep, what should I say, not animosity, but it created that distance between the two countries because of the suffering which took place because of the military action. So my government, I reached out to the Bangladesh Prime Minister, and I also invited her to Pakistan. But the relationship is not what it ought to be. It should be a much better relationship. There have been periods in which the relationship seems to have thawed, but for some reason the relationship has not grown. But I do agree with you that as two of probably the countries with the biggest population, Muslim populations, we should have far better relationship than it is right now. Thank you very much. Our next question is about Palestine, and it will be asked by Mr. Jalal Khshaib, who is a senior research associate at the Center for Islamic Global Affairs. Jalal? Thank you, Doctor. Assalamu alaikum. My question is regarding the Palestinian cause and the normalization with Israel. And as you know, all of you, the cause is witnessing now the चेयरमैन पीटीआई इमरान खान गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और इस वक्त सवालात के जवाब दे रहे हैं। टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है, इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इमरान खान की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं, हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। मजीद बोले जनरल बाजवा ने बड़ा जुल्म किया, डिफॉल्ट होने के करीब खड़े हैं। साबिक आर्मी चीफ के नजदीक सियासतदानों की करप्शन बेमायने थी। पीटीआई हुकूमत में 5% डिफॉल्ट का खतरा था, अब 90% है। मुल्क में जंगल का कानून है।
ये कहना कि अब शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत नहीं चल रही तो हम अमेरिका से या कहीं से कोई टेक्नोक्रेट इंपोर्ट करके यहाँ पे लगा दें, हमें बहुत तशवीश है कि आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भेज के हम 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना। देखें, ये पाकिस्तान के साथ ये तजुर्बे और मजाक बंद होना चाहिए। इमरान के बगैर तो पाकिस्तान की सियासत भांज है। इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट के खिलाफ एहतजाज हुआ तो वो जूते छोड़कर भाग जाएंगे। शहबाज शरीफ को घर भेजकर टेक्नोक्रेट हुकूमत लाना बड़ी गलती होगी। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में फैसले करने वाले लोग मजीद तजुर्बे करना बंद कर दें। हमाद अजहर बोले पीडीएम का तजुर्बा फेल हो गया, कोई नया तजुर्बा किया गया तो वो भी फेल होगा। दुरुस्त फैसले किए जाएं तो मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो सकता है। एस्टैब्लिशमेंट से उनके सहूलतकार हट गए, किसी और इदारे में शायद उनके सहूलतकार अभी मौजूद हो। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में गुफ्तगू, कहा ये चाहते हैं बैकडोर से एक मरतबा फिर वजीर आजम बन सकें। इलेक्शन वक्त पर होंगे तो इनके सहूलतकार किसी भी इदारे में मौजूद नहीं रहेंगे। हुकूमत के पीटीआई अरकान के इस्तीफों में ताखीरी हरबे। स्पीकर आजा परवेज अशरफ कहते हैं इकट्ठे आने की जरूरत नहीं, हर मेंबर अलग अलग आए, इस्तीफा लिखे फिर तस्दीक करूंगा। पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, आईने पाकिस्तान की पाबंद है। दरअसल पीटीआई वक्त कल सुबह 11 बजे स्पीकर से मुलाकात करेगा। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन न कराना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने में दिलचस्पी नहीं रखता। क्या कभी कौमी सूबाई असम्बली के इंतखाबात मुलतवी किए? क्या वफाकी हुकूमत पहले सोई हुई थी? 50-60 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, क्यों ना एडमिनिस्ट्रेटर की पावर को मुअत्तल कर दें। पाकिस्तान को रूस यूक्रेन जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। इमरान खान की गैर मुल्की स्कॉलर से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान जैसे ममालिक को बड़े तनाज़ात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। रूस यूक्रेन तनाज़े से दुनिया में बेशुमार मसाइल ने जन्म लिया। मज़ीद कहा अफगानिस्तान में रिजीम चेंज के नताइज पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के पेशा वराना तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। बदकिस्मती है कि हमने पाकिस्तान को उस पॉइंट के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है जहां पाकिस्तान डिडंट डिजर्व। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। लोगों को डरा के रखा हुआ है, कोई सोना खरीद रहा है, कोई डॉलर खरीद रहा है। 3 चीजें हैव बीन गोइंग वेरी रैपिडली रॉन्ग। नंबर 1, स्मगलिंग ऑफ डॉलर्स फ्रॉम पाकिस्तान टू ए नेबरिंग कंट्री। नंबर 2, हम व्हीट इंपोर्ट कर रहे हैं, वी आर शॉर्ट ऑफ व्हीट। तीसरी, फर्टिलाइजर भी हेवीली सब्सिडाइज, वो भी स्मगल हो रही है। मसाइल संगीन, हालात मुश्किल तरीन, लेकिन मुल्क दिवालिया नहीं होगा। मुल्क की मुआशी तबाही के जिम्मेदार इसहाक डार का दावा एतराफ़ किया डॉलर और खाद की स्मगलिंग हो रही है जो मईशत के लिए खतरनाक है। IMF को सबक पढ़ाने वाले वजीर खजाना ने तस्लीम किया कोई पैसे देने को तैयार नहीं, हम $1 बिलियन के लिए भाग रहे हैं। लोग मुआशी सूरत हाल से परेशान होकर सोना और डॉलर खरीद रहे हैं। दोस्त ममालिक हुकूमत को पैसे देते हुए डर रहे हैं। डॉलर की सप्लाई ना होने की वजह 3 रेट है। शौकत तरीन की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। मुजम्मिल असलम बोले मुल्क दिवालिया हो चुका है, कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी का बहुत बड़ा बहरान आने वाला है। $6 अरब के जखायर रह गए, रकम ना आई तो 8 से 10 हफ्तों में ज़र मुबादला के जखायर खत्म हो जाएंगे। डॉलर गायब, सोना नायाब, मार्केट तबाह। पीडीएम सरकार ने कौमी मईशत को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया। ओपन मार्केट में डॉलर 235 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गया। सोने की कीमत 1,82,800 रुपए हो गई। स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी। मेरे भाई के खून का साया होने ना दे। मेरे भाई यूं करे, मुझे नहीं मारा फिर भी मेरे भाई को मार के चले गए। मेरे भाई का कसूर क्या था? वजीर आला सिंध साईं मुराद अली शाह है, हमें इंसाफ चाहिए और हमारे बच्चे के लिए कुछ करें और कातिलों को इबरतनाक सजा दें।
कराची में मुहाफिज ही कातिल। गुलिस्तान जौहर में शाहीन फोर्स के एहलकारों ने नौजवान की जान ले ली। फ्लैट की सीढ़ियों पर बैठा आमिर जिंदगी की भीख मांगता रहा। तदफीन कर दी गई। मकतूल की 15 माह पहले शादी हुई थी। 3 माह के बच्चे का बाप था। दुखियारी मां की हाथ जोड़कर इंसाफ की अपील। आमिर के कत्ल में मुलविस 3 एहलकार गिरफ्तार। कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा। ATC में मुलजिमों का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड। गिरफ्तार एहलकारों ने एतराफी बयान में कहा, आमिर ने हाथ से इशारा किया तो गुमान हुआ, पिस्तौल निकाल लिया है। एहलकार शहरियार ने यके बाद दीगरे 2 गोलियां चलाई। नामवर आलमदीन मौलाना तारिक जमील अस्पताल में जेर इलाज। बेटे यूसुफ जमील का कहना है वालिद की हालत अब बहुत बेहतर है। 3 दिन तक डॉक्टर्स ने अस्पताल में अपनी जेर निगरानी रखना है। आपसे मजीद दुआओं की दरखास्त है। अमेरिका और कनाडा में बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी बदसूर मफलूज। अमरीकी वस्ती रियासतों में शदीद तबाही। हलाकतें 70 से जायद हो गई। रियासत न्यूयॉर्क शदीद मुतासिर। शहर बैफलो में 34 अफराद हलाक। हजारों परवाजें मनसूख। चीन में शदीद धुंध के बायस 200 से जायद गाड़ियां टकरा गई। Oh, that's turned. It's probably turned too much, I think. I think it's turned too much. 3 and 10. Does that come off the glove? Come off the glove, I think. And Latham knows it straight away. So. कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड की शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान की बरतरी खत्म। तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर 6 विकेटों पर 440 रन बना लिए। केन विलियमसन और टॉम लेथम की सेंचुरियां। अबरार अहमद ने 3, नुमान अली ने 2 शिकार की। ये जीवन भर का रोग सखी तो है पगली कहेंगे लोग सखी। याद आएंगे वादे बालों के। मलिका गजल इकबाल बानो की आज 87वीं सालगिरह है। क्लासिकल गुलकारा को फैज अहमद फैज के कलाम में कमाल हासिल था। उनकी आवाज आज भी कानों में रस खोलती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं। Actually, I want you to also be a bit specific on few points. How would you fight corruption that is not really among the elite, but it had reached even the smallest employee in government or in any corporation even? And also, how would you envision the new economy in Pakistan, development-wise and Islamization-wise, especially with the Supreme Court decision of elimination of interest? So okay. Let me just say that in Pakistan, if what I was trying to do when I was in power, but only for 3.5 years, and what I will again try and do, number one is imposing rule of law. Establishing rule of law is the beginning of prosperity. I believe that countries that are prosperous, if there is rule of law in a country, it cannot have poverty. If you look at the map, if you just look at the rule of law index all over the world, the countries which have a rule of law index above 80 or 90% are all prosperous, have no poverty. And most of our countries, I mean, if you look at Nigeria, Nigeria has the greatest amount of oil reserves in Africa, and yet it has huge poverty. But on rule of law index, Nigeria is 7%. So it is directly related. If you have rule of law, you have prosperity because it unleashes the potential of a society. You have investment coming into your country. Investment always comes into countries which clean governance. And capital flies from countries which do not have a governance, which don't have rule of law, which have poverty. So number one, and that is going to be the hardest thing to establish. Number one is rule of law, and rule of law will tackle the ruling elite. But Professor, your other 2 points, you know, the verse in the Quran about Amar bil Maruf wa Nahi anil Munkar,
which says enjoin the good and forbid what is bad. In other words, the moral society or the moral values of a society matter a lot, because when you make corruption unacceptable, when you stand up for the good, you know what? Strangely enough, some of the Western countries of Switzerland, Europe, Scandinavia, they actually work on Amar bil Maruf. The society rejects what is bad. You know, the society fights. So corruption at the lower levels can be fought and what we started in Pakistan was the teachings of the Holy Prophet, Sirat-e-Nabi, because that's what teaches you ethics. And unfortunately, we haven't taught our children ethics through the Sirat-e-Nabi, because the Prophet's life, the way he established the state of Medina, the way he raised the morality of the society, the way he established the rule of law by saying even if my daughter steals, she will be punished. That countries before you have been destroyed, where the powerful, when they stole, were not punished, and only the poor, weak crooks were punished. And this is, you know, the problem, I repeat, not in Pakistan, all over the developing world. And next is education. You see, in Muslim societies, education has to be considered sacred, as it was at the time of the Prophet. You know, we have not paid enough attention to education towards research and technology. And this is what I was trying to do in Pakistan. We were going to set up excellences of center in technology, because the future is technology. But eventually a country has to be sovereign. I believe that a country must stand its own feet, have dignity and self-respect, and that's what gives it strength. Because, you know, you rely on your own resources. A human being that walks on crutches, his legs will waste away. If the bigger weight we lift, it strengthens us. Same with human societies. If you start depending on aid, which we have, and if you depend on foreign loans and IMF, you would never really learn how to stand on your own feet. So a sovereign country is the key for me for success. Thank you so much for this. This is the last question, Mr. Prime Minister, and it's from one of our sisters and concerning the empowerment of women. Dr. Yasmin Saib is also a research fellow here at the Center for Islamic Global Affairs. Dr. Yasmin? Your Excellency, thank you so much for giving us your time today. I think it's important for us to end this discussion by addressing the question of women and women's empowerment. As we have seen recently, incidents in Iran as well as in Afghanistan. Many people have argued that no matter what, Muslim countries can never give women freedom and dignity. That's some of the prevailing arguments that we hear. And so I'd like to know how do you view this issue, and how would you accomplish this matter in a society that is quite traditional and conservative in many regards, also in a balanced way, without falling into what I would say, Western liberal ideologies or traps even. Thank you. Okay, so look, first of all, I do believe that the revolution, what our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did 1500 years ago, was a revolution, because he revolutionized the society. There were new concepts that came in, but one of them was he gave rights to women. We don't, we forget that long before the idea of women's rights in Western countries, 1500 years ago, rights were given to women, and in the last sermon of the Holy Prophet, he was very clear. He said, men have rights over women as women have rights over men. So the concept and dignity, of women. So in Muslim societies, if you look at Muslim societies, yes, sometimes when the idea, when we
the whole idea of parda is such, which I feel that we haven't done enough ijtihad on, enough debate on it. But the whole idea of parda for me was protecting the family system, because Islam was very clear that the basis of human society is the family system. So in protecting the family system, the concept of parda came. But unfortunately, we never developed these concepts so that we can protect our family system as well as not stop the potential of our women to grow. And Muslim societies are still developing these concepts. Unfortunately, we have two extremes right now. On one side, we have women who are in the name of parda banned from public life. On the other hand, we have the Western liberal ideas about women's liberation. So I believe that Islam is what we call the middle way. Islam is not a religion of extremes. It says in the Quran it's a religion of the middle way. But we haven't developed that middle way because there has not been enough research and not enough of debate in Muslim societies of finding that middle way. I do not believe that, the idea when they say the Western idea of the liberation of women, it's almost a competition between a man and a woman in the West now. I don't think Islam is much more the idea of a complementary relationship between a man and a woman. And that in Pakistan, in our conservative societies, I think gradually we are finding our way. But one thing that should not happen is, there's a clear verse in the Quran that there is no coercion in religion. You can't force people into religion. So when you do that, it doesn't, human beings have to be, the heart and the mind has to be won over. You can't force human beings through, through force to follow religious edicts, and it creates problems. It will always create problems. So I'm one of those who believes that it's through dialogue, through debate, through making people understand the true teachings of our Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. I think that's the way you win over people, but not by force. Thank you so much. Before we conclude, I just want to let you know that we received many questions. We tried to field some of them today. There are many other questions that we couldn't get in, hopefully in the future. But there is one question that I thought needs to be asked, and it's coming from the family of Dr. Afia Siddiqui, which says, if you come back to power as Prime Minister, can you commit to doing everything in your power to repatriate the daughter of the nation, Dr. Afia Siddiqui, within the first few months of your rule? Well, I can only tell the family of Afia Siddiqui that what she went through, first of all, it is tragic what she's been through to Afia Siddiqui. But we thought we came quite close to getting her released. We had negotiations going on with the U.S. government, and there was a thing of a give and take. We were trying to work out on a formula how to get her out of the U.S. prison. But unfortunately, it just didn't work out. And this was during the Trump administration. And unfortunately, I'm saying that when Trump lost the elections, the negotiations fell apart. But we were I thought we were quite close at one point where we could have done a deal with the US. So we could have got her back. So, the answer is yes, I'll try my best again, because, the US government might listen to if we do a give and take, a deal with them. But, just straight asking for a freedom is not easy, because they say, look, it's rule of law in the US. We have our justice system. She's been sentenced to 84 years in jail. And so they don't talk about, there's no way Pakistan can pressure them to release her. Inshallah, we'll find a way. I just want to thank you from the bottom of my heart for all your time. I would like to give you the final few moments for a closing statement. Well, first of all, again, I want to thank CIGA for affording me this opportunity.
You know, the problem about Muslim world is that, you know, we are still evolving. We are coming out of colonialism. We haven't found our feet. Our education system lags behind. We don't have a great many scholars who can direct us. We have a split. We have the westernized elites in the Muslim world who moved quite far away from the religion and don't understand much about it. And then we have a lot of conservatives who do not understand the Western thought. So, you know, the best minds right now, I find, who are sort of doing a lot of good work, are scholars who are living in the Western countries. I find that they are coming up with some of the best ideas. They understand the Western thought, and then they can compare, you know, our life, our way of thinking, our history, our culture, the Islamic principles. And some of them, I must say, some of the best work is being done in the Western countries. All Muslim scholars who've gone to the West have done research, and they've come up with some great original work. What I tried to do in my last, well, in my time in last 2 years in my, when I was in government, I formed a Rahmatul Alameen authority. It was an authority which Rahmatul Alameen, you know, the mercy for mankind, the title given to our Holy Prophet, peace be upon him. And the idea was that in our schools we would teach children the life of the Prophet. Because the Quran tells us to learn from the life of the Prophet. And why does the Quran tell us to learn from the life of the Prophet? Because he was the most successful man in human history. No human has achieved what he has done. So our children read books on Bill Gates or you know, all the sort of giants who've done well in business. But they need to understand the man who was the most successful person in human history. They need to learn from his life. And that's why the Almighty tells us to learn from his life, to his sunnah. And I tried to teach our children about, you know, the course in the curriculum we put in the life of the Prophet. And then in the universities, we wanted our scholars to do debate on the life of the Prophet. But above all, I wanted our university students to debate that what did our Prophet Muhammad do that brought in this revolution, that changed human beings. Muslims were hemmed in between two superpowers, and yet between 625 and 636 AD, what were 313 army in the Battle of Badr, and 636 the Roman Empire collapses in front of them at Yarmouk, and then the Persian Empire. So what happened in this short period which created these incredible human beings? There were, in that short space of time, there were never so many leaders. And yet in the Muslim world, we've not done enough research on them. What did because it was not something physical. It was a revolution of the minds. The Prophet changed the mindset of the people. He made them realize their potential in life. The same human beings got converted and became these great men. But and this is a fact of history, that between 625 to 636, in 11 years, from nothing, from a few 100 people, you know, who migrated, or maybe 1,000 people who migrated to Medina from Makkah, and yet from there they became the greatest civilization of mankind. But not enough work is being done to tell us all the things. How did the Prophet change the minds? It was a mindset that changed. The human beings sort of from as the great Rumi says, why do you crawl on the floor like ants when the Almighty has given you wings? So the people of Medina, the Muslims, had wings. They became these great men. And unfortunately, our young generation does not know that phenomena. And that's what I feel that our media and our scholarship and universities should concentrate on. They should find out
how these human beings changed. And it's, as I said, it's a fact of history what happened. And had it been, say, had a prophet been in the European countries or Western countries, there would have been so many films on him, documentaries on his life of how he changed, how this phenomena of from nothing these Arabs rose and the Muslims became the greatest power for hundreds and hundreds of years, and the greatest scientists and so on. And I think we need to, when you say what happens next and for the Muslims, I think this is the most important thing that needs to be done. Our scholars need to work on what happened in these years in Medina. How did our Holy Prophet change these human beings? That needs to be worked on. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you so much for your time, and I want to give some final thanks to Rebridges, who, without Mr. Majid Rafiq's help and without Dr. Arslan Khalid's help, this event wouldn't have been put together. They were really bridge builders between Turkey and Pakistan. I also want to tell you that we benefited a lot from your talk. चेयरमैन पीटीआई इमरान खान गैर मुल्की स्कॉलर से गुफ्तगू कर रहे थे। इस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में न्यूट्रल रहना चाहिए। रूस यूक्रेन जंग में भी पाकिस्तान को किसी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मैं वज़ीर आज़म था तो दुनिया के हर फोरम पर कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई। चीन ने गुज़िश्ता 60 सालों में बेमिसाल तरक्की की है। हमारा मुल्क गुज़िश्ता 30 साल में माशी तौर पर बहुत कमज़ोर हो गया और इसकी वजह मुस्तकिल करप्शन थी। दुनिया याद रखे कि पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। दोनों की अगर जंग हुई तो पूरी दुनिया लपेट में आ सकती है। जिन ममालिक में कानून की हुक्मरानी है वहाँ खुशहाली है। और अभी आपको अहम खबर दें, अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक दहशत गर्दी के फ्रीड से भरपूर तरीके से निपटा जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज़म आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कॉन्फ्रेंस में इस बात का इयादा किया गया कि दहशत गर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, दहशत गर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का इयादा किया गया। अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक दहशत गर्दी के फ्रीड से भरपूर तरीके से निपटा जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें इस आज़म का इयादा किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया। कॉन्फ्रेंस में इस बात का आज़म किया गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी और किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। दहशतगर्दी से पाक इस मुल्क को बनाया जाएगा। दहशतगर्दी के फ्रीद से भरपूर तरीके से निपटा जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस अज़म का इयादा किया गया है। जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका एलामिया अब जारी हो चुका है और दहशतगर्दी के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई करने की बात की गई है और दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने की बात इस कॉन्फ्रेंस में की गई है। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत ये अहम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और मुल्क में जारी हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतालिक भी इसमें गुफ्तगू हुई। डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। शेर, इसका एलामिया जारी हो गया है, क्या कुछ तय पाया इस कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल, ISPR की तरफ से जारी किए गए एलामिया के मुताबिक कल और आज 2 रोजा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है उसकी सदारत आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की और इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो है वो मुल्क की जो सूरत हाल है, खासतौर से सिक्योरिटी की सूरत हाल, उससे गौर किया गया और इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने इस अज़म का इजहार किया है कि बिला इम्तियाज दहशतगर्दी की कोई भी किस्म क्यों ना हो उसके खिलाफ जो है वो भरपूर एक्शन किया जाएगा और किसी भी सूरत में जो है वो कौम की जो उमंगे हैं उनके मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आगे बढ़ा जाएगा। जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसमें फौज के जो इंटरनल पेशा वाराना अमूर हैं और जो तकनीकी जंगी महारतें हैं उनके हवाले से खुसूसी तौर पर जो है वो गौर किया गया है। सरहदी सूरत हाल और इंटरनल सूरत हाल पे भी गौर किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली शेर, अपडेट कर रहे थे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। और 2 रोज़ा ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो कि अब खत्म हो चुकी है, इसका एलामिया जारी कर दिया गया। तो अली शेर, अभी जो दहशतगर्दी के खिलाफ इस वक्त हालिया कार्रवाई हुई हैं, इनसे निपटने के लिए कोई नया एक्शन प्लान तैयार किया गया? ये जो आर्मी चीफ का दौरा था शुमाली वजीरिस्तान का, फिर उसके बाद जो SSG कमांडोज थे जिन्होंने बन्नू CTD ऑपरेशन किया था, वहां पे भी आर्मी चीफ गए थे तरबेला में, तो उसके हवाले से भी और फिर उसके बाद जो बलूचिस्तान में कार्रवाइयां हुई हैं, इस सारे तनाजर में ये तहैया किया गया है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि जो भी इस तरह की जहां इंसर्जेंसी बढ़ रही है
वहां पे हर सूरत जो है उसको कर्ब किया जाएगा और किसी भी सूरत में जो है वो कौम को मायूस नहीं होने दिया जाएगा। कौम की उमंगों के मुताबिक जिस तरह पहले दहशतगर्दी का सर कुचला था, इसी तरह से पाक फौज जो है वो दोबारा जो है उसी जोश और जज्बे के साथ, डील एंड जेस्ट के साथ जो है वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली शेर, इस बारे में जानते रहेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। हमने सोचा, इरादा किया, कर दिखाया। पंजाब में खेल और खिलाड़ियों की फलाह के लिए वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का इनकलाबी कदम। सूबा पंजाब की तारीख के सबसे बड़े खिलाड़ियों के लिए स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा। 2 अरब रुपए के स्पोर्ट्स एंडोनमेंट फंड का कयाम। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी टैलेंट हंट कैंपेन और तहसील, जिला, डिवीजन और सूबाई सतह पर मुकाबलों का इनकाद। हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स समेत ओलंपिक और 37 रवायती खेल। पहली बार होनहार एथलीट्स के लिए महाना 7,500 रुपए वजीफे की मंजूरी। स्पोर्ट्स वेटरन्स और लेजेंड्स के लिए वज़ाइफ का ऐलान। महाना 15,000 रुपए वजीफा। वफात पाने वाले खिलाड़ियों के खानदानों की माली इमदाद के लिए फंड्स का इजरा। स्कूल गेम्स की बहाली, प्लेयर्स की कोचिंग के लिए माहिर कोचेस की जेर निगरानी अकेडमीज का कयाम। नौजवान होनहार खिलाड़ियों की अंदरून और बैरून मुल्क गैर मुल्की क्वालिफाइड कोचेस की जेर निगरानी तरबियत और स्पेशल पैरा एथलीट्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, हुकूमत पंजाब। प्रिंस चोको जर्नीज, चॉकलेटी एडवेंचर्स हर रोज। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जेर क़यादत और वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सरपरस्ती सूबा भर में 26 अरब रुपए से जायद की लागत से सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद अहम मंसूबाजात का ऐलान। कैंसर के मरीजों के लिए जदीद रेडियोथेरेपी यूनिट, लीनियर एक्सेलरेटर मशीन और साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी की सहूलत। दिल के मरीजों के इलाज मालजा के लिए थीलियम स्कैन, सीटी एंजियोग्राफी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी आलात और ट्रांजिट टाइम फ्लो मीटर जैसी जदीद मशीनों की फराहमी। जबकि माँ और बच्चों की सेहत के लिए इनकलाबी इक़दाम के साथ साथ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में अदम दस्तियाब सहूलियात की फराहमी और सूबा भर के अस्पतालों में सेहत की सहूलियात में इजाफा। हुकूमत पंजाब। मिले अभी मैं हेल्प करूं? प्यारा ये पल छूले अब विंटर में ड्राई स्किन, इसको छुपाओ मत, नरिश करो। पॉन्ड्स बॉडी लोशन, इसका विटामिन B3, C और E से भरपूर फॉर्मूला दे 10 लेयर डीप एक्शन जो गहराई में जाकर स्किन को मुलायम बनाए। पॉन्ड्स बॉडी लोशन, सॉफ्ट और स्लो स्किन रोजाना। सयाह मरी और दीगर शुमारी इलाकों में सफर पर जाने से कबल मौसमी सूरत हाल से आगाह रहें। खाने पीने का मुनासिब सामान, जरूरी अद्वियात और पानी साथ रखें। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जाने से पहले गाड़ी को मुकम्मल तौर पर चेक करें और फ्यूल टैंक फुल करवा लें। बर्फबारी वाले इलाकों में टायरों पर चेन चढ़ाएं और हवा कम रखें। ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करें। रोड ब्लॉक होने की सूरत में गाड़ी में ज्यादा देर तक हीटर न चलाएं। कार्बन मोनोऑक्साइड को खत्म करने के लिए टेल पाइप को साफ करते रहें। मकामी इंतजामिया की दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल करें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में मकामी इंतजामिया के कंट्रोल रूम नंबर्स या PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। आपका तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह। हुकूमत पंजाब। क्या हुआ? स्कूल में लड़कियों ने तंग किया। बैठो, ये देखो तुम्हारे बाल। इन्हें खींचो, मरोड़ो, तंग करो। इन्हें चोट लगती है? क्योंकि ये मजबूत हैं। तुम भी तो मजबूत हो ना। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जेर क़यादत और वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सरपरस्ती सूबा भर में 26 अरब रुपए से जायद की लागत से सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद अहम मंसूबाजात का ऐलान। कैंसर के मरीजों के लिए जदीद रेडियोथेरेपी यूनिट, लीनियर एक्सेलरेटर मशीन और साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी की सहूलत। दिल के मरीजों के इलाज मालजा के लिए थीलियम स्कैन, सीटी एंजियोग्राफी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी आलात और ट्रांजिट टाइम फ्लो मीटर जैसी जदीद मशीनों की फराहमी। जबकि माँ और बच्चों की सेहत के लिए इनकलाबी इक़दाम के साथ साथ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में अदम दस्तियाब सहूलियात की फराहमी और सूबा भर के अस्पतालों में सेहत की सहूलियात में इजाफा। हुकूमत पंजाब। 2 घंटे हो गए, इतनी भूख लगी है। कल शादी है और तुमने डिसाइड भी किया तुमने कौन सी शेरवानी पहननी है, व्हाइट या गोल्ड? जब उम्र कैद हो ही रही है तो क्या फर्क पड़ता है व्हाइट हो या गोल्ड? Blame the book.
गोल्ड पहन लूंगा यार। Crispy, salty and light. सयाह मरी और दीगर शुमारी इलाकों में सफर पर जाने से कबल मौसमी सूरत हाल से आगाह रहें। खाने पीने का मुनासिब सामान, जरूरियत और पानी साथ रखें। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जाने से पहले गाड़ी को मुकम्मल तौर पर चेक करें और फ्यूल टैंक फुल करवा लें। बर्फबारी वाले इलाकों में टायरों पर चेन चढ़ाएं और हवा कम रखें। ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करें। रोड ब्लॉक होने की सूरत में गाड़ी में ज्यादा देर तक हीटर न चलाएं। कार्बन मोनोऑक्साइड को खत्म करने के लिए टेल पाइप को साफ करते रहें। मकामी इंतजामिया की दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल करें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में मकामी इंतजामिया के कंट्रोल रूम नंबर्स या PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। आपका तहफ्फुज हमारी तरजीह। हुकूमत पंजाब। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अभी आपको बताएं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है। इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। चेयरमैन PTI इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं, हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। जनरल बाजवा ने बड़ा जुल्म किया, डिफॉल्ट के करीब खड़े हैं। साबिक आर्मी चीफ के नजदीक सियासतदानों की करप्शन बेमायने थी। PTI हुकूमत में 5% डिफॉल्ट का खतरा था, अब 90% है। इंतखाबात नजर नहीं आ रहे। इलेक्शंस में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नताइज अच्छे नहीं होंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है। अभी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। हुकूमत से ज़्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना ज़रूरी है। इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ को भी निशाने पर रखा। बोले, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मुल्क पर बड़ा जुल्म किया। इनके नज़दीक सियासतदानों की करप्शन बेमायने थी। हमारी हुकूमत में डिफॉल्ट का खतरा 5% था, जो अब 90% हो चुका है। इमरान खान का कहना था, मुल्क पर कब्जा ग्रुप का राज है और जंगल का कानून है। PDM सिर्फ ड्राइंग रूम की जमात बनकर रह गई है। नैब कवानीन में तरमीम करके 1100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस खत्म कर दिए गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मफादात ही पाकिस्तान से नहीं है, तो इनसे कैसे मिसा के मईशत करें। चेयरमैन PTI ने कहा, कानून की हुक्मरानी कायम किए बगैर पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ये चाहते हैं कि आमरीत का दरवाजा खुले। इनकी ख्वाहिश है कि बैक डोर से एक मरतबा फिर इक़्तिदार में आए। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल का कहना था कि इस किस्म का सियासी बयानिया आमराना होता है। बिलावल PTI पर ही तनकीद करते रहे। पाकिस्तान के इदारे, हर पाकिस्तानी के इदारे वो PTI का टाइगर फोर्स बन के काम करे। अगर उनका बयानिया ये होगा कि आईन तुरवाए, ताकि वो शख्स जो 6 महीने से सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं रहा, उसको हम आईन तोड़ के ज़बरदस्ती उसको फिर से वज़ीर आज़म बनाए, तो मेरा ख्याल में इस किस्म का जो सियासी बयानिया है, जमहूरियत के खिलाफ होता है, वो आमराना सोच होता है, गैर जमहूरी सोच होता है। और पाकिस्तान के अवाम को जब भी मौका मिला, इन्होंने गैर जमहूरी क़ुव्वतों को, सिलेक्टेड क़ुव्वतों को शिकस्त दिलवाया है और जमहूरी क़ुव्वतों को करवाया। स्पीकर कौमी असम्बली का इस्तीफों पर दोहरा मयार क्यों? PTI के 11 MNAs के इस्तीफे मुलाकात के बगैर तस्लीम किए तो अब बुलाए बगैर 107 क्यों मंजूर नहीं हो सकते? तहरीक इंसाफ ने सवाल उठा दिया। इस्तीफों की मंजूरी के तरीकाकार पर शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में PTI का वफ्द कल सुबह 11:30 बजे स्पीकर कौमी असम्बली से उनके चैम्बर में मुलाकात करेगा। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, आइन के तहत इस्तीफे अरकान से अलग अलग मुलाकात की सूरत में ही तस्लीम किए जा सकते हैं। चाहता हूं तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में वापस आए। स्पीकर पंजाब असेंबली इम्रान खान का बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बड़ा इंकशाफ। बोले, जनूबी पंजाब के हमारे 7 से 8 अरकान को करोड़ों रुपए की ऑफर हुई है। 1 और 2 अरकान की डील करने की इत्तलात मिली। पार्टी ने बास पुरुष की है, जिस पर उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ रहने का अज़म दोहरा दिया है। बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बात करते हुए इम्रान खान का कहना था कि अब मालूमात मिल जाती हैं कि कौन कितने में बिका, और मुसद्दका इत्तलात के बाद चंद घंटों में रुकने असेंबली को नाअहल भी किया जा सकता है। प्रोग्राम नेशनल डिबेट आज शब 11 बजे बोल न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। 7-8 ख़वातीन और मर्दों की ये शिकायत आई है कि हमें
ऑफर के टेलीफोन आए हैं। अच्छा, बट उनमें से तस्दीक जो हुई है वो 1-2 की हुई है कि उन्होंने कोई डील वील का कोई चक्कर उनका चल गया है। उन्होंने हमें भी यकीन दहानी कराई है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं बट वी विल स्टैंड अलोंग विद आवर पार्टी। पीडीएम वाले कर रहे हैं और ये ऑफर्स की ज्यादा जो खबरें आ रही हैं ना जमील साहब सर, वो कुछ साउथ वाली साइड से आ रही हैं, सिंध मतलब उस साइड से कोई पैसे वैसे की खबर अगर कोई आ रही है तो आ रही है। और मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा और कहीं से नहीं आ बताने का मतलब तो ये है कि हर कोई उनकी नीयतें साफ है और वो अंदर से क्रिस्टल क्लियर है। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने एक बार फिर मुल्क में मुआशी तरक्की का लॉलीपॉप दे दिया। दावा किया पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। वज़ीर खजाना ने डॉलर की बैरून मुल्क स्मगलिंग का एतराफ भी किया, साथ ही साबिक हुकूमत पर इल्जाम तराशी की रविश भी दोहरा दी। रहनुमा PTI मुजम्मिल असलम ने इसहाक डार के दावों का पोस्टमार्टम कर दिया। इंकिशाफ किया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा नहीं, डिफॉल्ट हो चुका है। डॉलर की बैरून मुल्क स्मगलिंग को हुकूमती करतूतों का नतीजा करार दिया। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने पाकिस्तान को उस पॉइंट के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है जहां पाकिस्तान डिडंट डिजर्व। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। हम दिवालिया हो चुके हुए हैं। दिवालिया की निशानी ये होती है कि जब आपके कारखाने बंद होना शुरू हो जाए। 3 चीजें हैव बीन गोइंग वेरी रैपिडली रॉन्ग। नंबर 1, स्मगलिंग ऑफ डॉलर्स फ्रॉम पाकिस्तान टू ए नेबरिंग कंट्री। नंबर 2, हम व्हीट इंपोर्ट कर रहे हैं। तीसरी, फर्टिलाइजर भी हेवीली सब्सिडाइज। आने वाले चंद महीनों में यू विल सी कि वी विल इंशाल्लाह बाय द क्लोज ऑफ फिस्कल ईयर वी विल बी इन मच बेटर पोजीशन। हर हफ्ते आधा अरब डॉलर खत्म होता है कि ये जिस स्पीड से जा रहे हैं और अगर बाहर से रकम नहीं आई तो 8 से 10 हफ्तों में पाकिस्तान के रिजर्व खत्म हो जाएंगे। हमारी भी हुकूमत उस वक्त बॉर्डर नहीं था हमारे साथ। अभी कह रहे हैं जी बॉर्डर से डॉलर निकल रहे हैं। उस वक्त कैसे? उस वक्त तो मुल्क में अंदर आ रहा था डॉलर, अब बाहर जाना शुरू हो गया है। तो ये आपकी करतूतें हैं। कोशिश होगी इस्लामिक टीम की कि हम इस दफा सेकंड टाइम पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम पूरा करें। 2 महीने संभाल नहीं सके IMF का प्रोग्राम। वो पाकिस्तान आए थे 25 साल की IMF से डीलिंग के तजर्बे पे। इसहाक डार साहब फ्री भी नहीं करा रहे, बात करना नहीं पसंद कर रहे। पाकिस्तान के मुआशी हालात कमजोर से कमजोर तर हो रहे हैं और हर तरफ से दिवालिया होने की आवाजें उठने लगी हैं। मुआशी माहिरीन ने मुल्क को दिवालिया करार दे दिया है। मजीद हम जानेंगे इस्लामाबाद से उमर हयात खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के माली ज़खायर में कमी, मुआशी हालात दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से IMF से नए जायजे के मुज़ाकरात भी तात्तुल का शिकार हैं। माहिरीन का कहना है कि मुल्की मईशत के दिवालिया होने की वजह से बैरूनी सरमायाकारी में कमी और बड़ी सनतों की पैदावार में भी कमी हुई है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के वाइस चांसलर डॉक्टर नदीमुल हक ने कहा है कि मुल्क इस वक्त दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान के पास इम्पोर्ट बिल के लिए LCs खोलने के पैसे भी नहीं है। आपने लोगों के पैसे देने बंद कर दिए हैं। आपने जो इंपोर्ट्स की बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है LCs हैं उनको बंद कर दिया। आपने पोर्ट्स पे शिप खड़ी हैं उनको क्लियर करना बंद कर दिया है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के नायब सदर चौधरी अहमद जवाद ने साल 2022 को पाकिस्तानी मईशत के लिए बदतरीन करार दिया। साल 2022 जो भी ख़त्म होने को है ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बुरा साल रहा। इस साल में इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ है मुल्क में फैक्चुअली। मौजूदा हुकूमत ने यह दावा किया था कि मुल्क की मईशत को बेहतर डगर पर लाया जाएगा, लेकिन मौजूदा हुकूमत अपने इस दावे में नाकाम नजर आती है। मौजूदा हुकूमत का यह दावा था कि मुल्क की मईशत को मजबूत बनाएंगे और मुल्क की मईशत को दुरुस्त सिमत में लेकर आएंगे, लेकिन मौजूदा हुकूमत अपने इस दावे में हमें मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई। आज मुल्क के दिवालिया होने की खबरें हर तरफ गर्दिश कर रही हैं। कैमरामैन मुदस्सिर जावेद के साथ उमर हयात खान, खजाना डिवीजन, क्यू ब्लॉक, इस्लामाबाद। कराची में बदअमनी का उरूज, आधे घंटे में फायरिंग के 3 वाकयात से शहरियों में खौफ की लहर दौड़ गई। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और खातून समेत 3 अफराद जख्मी। कराची में मुहाफिज ही कातिल बन गए। गुलस्तान जौहर में अहलकारों ने निहत्ते नौजवान को फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया।
सीढ़ियों पर बैठा नौजवान जिंदगी की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी को तरस नहीं आया। मकतूल को आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने पढ़ाई। दुखियारी मां ने हाथ जोड़कर इंसाफ की अपील की। मेरे भाई के खून का साया होने ना दे। भीगी आंखें, लबों पर फरियाद, दुखियारी बहन मांग रही है खून नाहक का हिसाब। मेरे भाई यूं कर रहे, मुझे नहीं मारा फिर भी मेरे भाई को मार के चले गए। मेरे भाई का कसूर क्या था? ये इल्तिजा इस निहत्ते नौजवान के लिए है जिसका खून कानून के रखवालों ने बहाया। सफाकी की दास्तान गुलिस्तान जौहर नौमान एवेन्यू में लिखी गई। आमिर नन्ही बच्ची के साथ मोटरसाइकिल पर महसफर था। नाके पर बाइक न रुकी। एहलकार पीछा करते फ्लैट पर चले आए। गोली लगने से आमिर सीढ़ियों पर गिर पड़ा। जिंदगी की भीख मांगता रहा मगर इल्तिजा असर न दिखा सकी। दूसरी गोली चली जो मौत का पैगाम ले आई। आमिर की नमाज जनाजा दानिश पार्क गुलशन इकबाल में अदा की गई। नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने पढ़ाई। नौजवान की 15 माह कबल शादी हुई। 3 माह की बच्ची का बाप था। दोस्त के मुताबिक आमिर इसके साथ माँ की दवा लेने निकला था। जैसे हम लोग अंदर घुसे, ये लोग भी पीछे से अंदर घुसे। इसने कहा मैं बाइक के पास जा रहा हूँ दवाइयाँ लेने। तो इसने एक पैर मेरे को मारा, तो मैं तो बच गया, मैं पीछे से निकला। एक पैर मेरे को मारा, फिर बाद में एक पैर इसके पैर को मारा। जब जैसे ही झुक गए ना, एक पैर इसके पीठ को मारे। दुखियारी माँ ने भी हुकाम से इंसाफ की अपील कर दी। वजीर आला सिंध साईं मुराद अली शाह है, वो उससे यानी मुतालबा करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमजा के लिए कुछ करें। हमजा के बाबा के साथ इतना जुल्म हुआ, हमारे बेगुनाह बच्चे को इन लोगों ने मारा। हमें इंसाफ चाहिए और हमारे बच्चे के लिए कुछ करें और कातिलों को इबरतनाक सजा दें। आमिर ने खुद तो अपनी आंखें बंद कर ली इस आस के साथ कि शायद करता धरताओं की आंखें खुल जाएं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद देखिए एक दिन 3 कप्तान। और सुसर की विकेट सबसे ज्यादा कीमती। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर क़यादत और वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सरपरस्ती सूबा भर में 26 अरब रुपए से जायद की लागत से सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद अहम मंसूबाजात का ऐलान। कैंसर के मरीजों के लिए जदीद रेडियोथेरेपी यूनिट, लीनियर एक्सेलरेटर मशीन और साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी की सहूलत। दिल के मरीजों के इलाज मुआवजा के लिए थीलियम स्कैन, सीटी एंजियोग्राफी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी आलात और ट्रांजिट टाइम फ्लो मीटर जैसी जदीद मशीनों की फराहमी। जबकि माँ और बच्चों की सेहत के लिए इनकलाबी इक़दामात के साथ साथ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में अदम दस्तियाब सहूलियात की फराहमी और सूबा भर के अस्पतालों में सेहत की सहूलियात में इजाफा। हुकूमत पंजाब। सोचा, इरादा किया, कर दिखाया। पंजाब में खेल और खिलाड़ियों की फलाह के लिए वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का इनकलाबी कदम। सूबा पंजाब की तारीख के सबसे बड़े खिलाड़ियों के लिए स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा। 2 अरब रुपए के स्पोर्ट्स एंडोनमेंट फंड का कयाम। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी टैलेंट हंट कैंपेन और तहसील, जिला, डिवीजन और सूबाई सतह पर मुकाबलों का इनकाद। हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स समेत ओलंपिक को 37 रवायती खेल। पहली बार होनहार एथलीट्स के लिए महाना 7,500 रुपए वजीफे की मंजूरी। स्पोर्ट्स वेटरन्स और लेजेंड्स के लिए वज़ाइफ का ऐलान। महाना 15,000 रुपए वजीफा। वफात पाने वाले खिलाड़ियों के खानदानों की माली इमदाद के लिए फंड्स का इजरा। स्कूल गेम्स की बहाली। प्लेयर्स की कोचिंग के लिए माहिर कोचेस की जेर निगरानी अकेडमीज का कयाम। नौजवान होनहार खिलाड़ियों की अंदरून और बैरून मुल्क गैर मुल्की क्वालिफाइड कोचेस की जेर निगरानी तरबियत और स्पेशल पैरा एथलीट्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, हुकूमत पंजाब। प्रिंस चोको जानी जो अंदर छुपे गणित को बाहर लाए। तुम कैसे बच गए प्रिंस चोको जानी, चॉकलेटी एडवेंचर्स हर रोज।
शाबाश शहबाज, ये मिर्चें तो चढ़ेंगी दिमाग को। अब किसको दिखाओगे ये शक्ल? ऐसा करो, इसे धो लो। हीरो बनने को किसने कहा था? मिर्ची भगा, स्प्राइट लगा, ठंड रहा। सुपर कार्ड मैक्स लाया ज्यादा इंटरनेट की बड़ी बेफिक्री, वो भी पूरे महीने के लिए सिर्फ 749 रुपए में। तो अभी *629# डायल करो और एंजॉय करो ज्यादा इंटरनेट और लगातार कॉल्स। तो जब चाहिए हो महीने भर की बेफिक्री, बेस्ट चलेगा यूफोन 4G, पाकिस्तान का बेस्ट 4G नेटवर्क। यूफोन 4G, तुम ही तो हो। Crispy, salty and light. हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक। You can feel the burn, feel the burn. Blaze it, blaze it. इसका magic. BOL News Headquarters. वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करते हैं खेल के मैदान से। कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड की शानदार कारकर्दगी, पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म कर दी। तीसरे दिन के खेल पर 6 विकेटों पर 440 रन बना लिए। टॉम लेथम और केन विलियमसन की शानदार बल्लेबाजी, दोनों ने सेंचुरियां स्कोर की। पाक न्यूजीलैंड टेस्ट मैच के तीसरे दिन एक अनोखी सूरत हाल पैदा हो गई। पाकिस्तानी टीम इंतजामिया आईसीसी कवानीन से ही लाइव निकली। कप्तानी मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद और बाबर आजम के गिर्द फुटबॉल की तरह घूमती रही। आप नहीं, आप चले आप कप्तान किसे बनाएं? पाकिस्तानी टीम इंतजामिया कंफ्यूज हो गई। कराची क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन बाबर आजम फ्लू के बाइस शुरुआत में मैदान में ना उतर सके। कौमी टीम के ड्रेसिंग रूम में मौजूद प्रोफेशनल टीम इंतजामिया आईसीसी के कवानीन से ही लाइव निकली। टीम से बाहर बेंच पर बैठे नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान को मैदान में उतार दिया, कप्तानी सौंप दी। मैच रेफरी को मामले का इल्म हुआ तो फौरी तौर पर मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से रोक दिया। टीम इंतजामिया को कवानीन से आगाह किया। जग हसाई होने के बाद इंतजामिया को ख्याल आ गया कि सरफराज अहमद को आर्जी कप्तान बनाया जाए। खाने के वक्फे के बाद बाबर आजम की तबीयत बेहतर हो गई तो कप्तानी सरफराज अहमद से फिर वापस ले ली गई। और दुनिया भर में मौसम के बदलते तेवर, अमरीका निशाने पर। बर्फबारी का बदतरीन तूफान, मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 70 हो गई। शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद हो गया। न्यूयॉर्क का शहर बफेलो बर्फ से ढक गया। बफेलो में लोगों को आज भी घरों में रहने की हिदायत जारी की गई है। न्यूयॉर्क के मगरबी इलाके में 4 फीट बर्फ पड़ चुकी है। लोग इसके नीचे दब चुके हैं और बिजली से भी महरूम हैं। कनाडा में भी बर्फानी तूफान ने मामूलात ज़िंदगी को तहस नहस करके रख दिया। जापान में बर्फानी तूफान ने 17 जिंदगियां निकल ली। मस्कत में शदीद बारिश से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। सलीम शेख की बेटी की शादी पर नुमान एजाज ने एक तस्वीर शेयर की और उस पर अजराहे मजाक कैप्शन दिया कि माशाल्लाह, इसे कहते हैं नेपोटिज्म। चलो अब सब तनकीदी कमेंट्स करना शुरू हो जाओ। नुमान एजाज का ये लिखना ही था कि सारिफीन ने लब्बैक कहते हुए भरपूर कमेंट्स किए। किसी ने नुमान एजाज के बेटे जावियार की अदाकारी की तारीफ की तो किसी ने कहा कि नुमान एजाज को कहना था कि आपके बेटे की अदाकारी फिर भी बेहतर है, ऐसा नेपोटिज्म हमें कबूल है। किसी ने लिखा कि शहजाद शेख और शहरोज सब्जवारी को बिल्कुल अदाकारी नहीं आती, जब भी इन्हें नेपोटिज्म से शिकायत है। और पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के हर दिल अजीज गुलकार आतिफ असलम ने फोटोग्राफर